आप में से कुछ लोग सात्विक मूवमेंट को शायद जानते होंगे या फिर इनकी कोई ना कोई वीडियो जरूर देखी होगी. Recently, I came across this video of theirs and I just couldn't stop myself from watching it, as the title claimed lose weight without any exercise, and that made me very curious. Hi, I'm Prachi Gupta, your certified nutrition fitness coach. In this video, I'm going to review Sattvic Movement's diet plan and exactly what's wrong with it. Now, if you're someone who believes in biological science, logic, data, research papers and guidelines from credible organizations like NIN, ICMR and WHO, then this video will make sense to you. Please note that I am in no way against Ayurvedic literature or ancient Ayurvedic practices. I am only reviewing the diet plan they suggest to lose weight or fat while keeping below factors in mind. Number 1. Will it give results? Which is numbers going down on weighing scale. Number 2. Will it fulfill all your macro and micronutrient requirements? Number 3. Will you be able to sustain it throughout your life? Before we start, YouTube analytics show us that 80% of you watching have not subscribed yet. If you like what I'm sharing here, then request you to please subscribe to my channel, as it's absolutely free and it would give me a huge confidence boost to keep bringing informative and science-backed content for you. Pre-breakfast. There are two very simple options here that work wonderfully to help you stay in shape. The first is Amla juice. This juice fires up your digestion, and when your digestive fire is strong, your food does not just sit there turning into extra kilos. It gets digested more quickly and your weight automatically stays in check. The second option is our good old Ashgard juice. Do you know, a study showed that those who drank this juice even just 4 days in a week saw a significant drop in their weight. Their waist size came down and the fat thickness around their arms and back also reduced. Even an important marker, NLR, which shows inflammation in the body, also went down. Okay, good so far, and I'm happy that they have given some scientific reference, but the journal that published this study has a doubtful reputation, and experts believe that it may not carefully review the research for quality. Also, if you go through the entire study, the research only had 60 people and didn't use a comparison group. So the results are too weak to say for sure that Ashgard juice caused the changes in the weight. देखो, आंवला जूस या फिर Ashgard juice पीना चाहते हो तो पी लो, बट सिर्फ डाइजेशन के लिए पीना ये कोई मैजिकल पोशन नहीं है जिसको पीते ही आपका फैट बटर की तरह मेल्ट होने लग जाएगा. बट काश ऐसा होता, नहीं? Is to start your morning with fruit instead of something heavy and grain based. Within fruits, go for the lighter ones like pears, apples, pomegranate, strawberries, cherries, melons, and less of the heavy dense ones like bananas, mangoes, chikus, coconuts or dates. You can make a fresh fruit bowl and sprinkle a few seeds over it like sunflower, pumpkin or flax seeds to make it more wholesome. A few nuts is also okay to add along, but not more than 5 to 7. Okay, so fruit options that they have suggested are good. All of them have low to moderate glycemic index and will not give you sharp spike in blood sugar levels. All we have eaten so far is simple carbohydrate through fruits and some healthy fat through nuts and seeds, but zero protein. Alright, it's lunch time. So your lunch should be the main meal of your day, the biggest one. This is where you can have your grain meal. To make this, pick any one grain with twice the amount of vegetables. This could take the form of roti sabzi or a khichdi or dosa with stew or millet or quinoa with lots of vegetables, anything you like. The best grains for kapha are millets. Millets are our ancient grains with so many types available. Bajra, jowar, ragi, gangani, the list just goes on and on. You can pick any millet and basically use it as a substitute for rice or wheat. Even for making chapatis, you can use the flour of millets. You want to avoid rice and wheat, especially if you have a tendency to gain weight, as they are relatively heavier to digest. Moving on to our veggies, you can have plenty of water-rich veggies like bottle gourd, which is lauki, rich gourd, torai, pointed gourd, parval, ash gourd, petha, round gourd, tinda. Did you even know so many gourds exist?
And of course, carrots, cauliflower, broccoli, cabbage, bell peppers. However, you want to avoid consuming too much of those veggies which are dense, like potato, sweet potato, jackfruit, yam, or pumpkin. Remember, reduce sweet, fatty, and dairy, and instead eat food that's what? Slightly pungent, bitter, light, and airy. देखो, मिलेट्स खाना चाहते हो तो ज़रूर खाओ, बट गेहूं की रोटी या फिर राइस को ये बोल के मत छोड़ो कि बेकार है। आपके इजी रेफरेंस के लिए स्क्रीन पे लगाए हैं न्यूट्रिशनल प्रोफाइल ऑफ ऑल मिलेट्स दैट शी टॉक्ड अबाउट एंड राइस एंड व्हीट। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर न्यूट्रिशनली सेम। गेहूं की रोटी जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं वो खाना छोड़ दें। चलो ठीक है, मैं अगर मिलेट्स पे आ भी जाऊं तो मुझे नंबर्स के अकॉर्डिंग या फिर इनका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल देखकर तो कोई खास एडवांटेज नहीं मिल रहा है एज कम्पेयर टू होल व्हीट फ्लावर। हाँ, राइस ज़रूर मैं थोड़ा रिड्यूस कर सकती हूँ एज इट हैज़ वेरी लिटिल फाइबर, बट फिर भी आई कैन ईजिली पेयर it with veggies to increase its fiber content and have it once in a while. Point before we move to mid-meal and dinner, one thing that kaffas must absolutely avoid, especially after lunch, is napping. To eat a heavy meal and directly go to sleep after that is a short way to pile on weight. Instead, what you need is to take a short walk, just even 100 steps after your meals. Now this advice is good but not for a specific body type but for every single person irrespective of their age, gender और body weight. काश ये भी explain करते कि क्यों करनी चाहिए walk after lunch. Let me throw some light on it. Lunch is usually carb rich for maximum people like this one. Carbohydrate rich meal लेने के बाद हमारे blood में एक sugar spike आता है. अगर हम 15 to 20 minutes की brisk walk कर लेते हैं तो हमारी body के cells ग्लूकोज या फिर शुगर की अपटेक को फास्ट एंड मोर एफिशिएंट बना देते हैं, जिससे आपका ब्लड से ग्लूकोज इजीली क्लियर आउट हो जाता है एंड आपके ऑर्गन्स प्रॉपर्ली काम करते हैं। मिड मील फॉर दिस यू कैन एंजॉय कोकोनट वाटर और इवन जिंजर तुलसी टी व्हिच इज ग्रेट फॉर बूस्टिंग योर डाइजेशन एंड क्लियरिंग कंजेशन. And if you're still hungry, you can have a light fruit, a few slices of coconut or roasted makhanas. Keep it simple and light. Again, really low calorie options for snacks. Now, time for our final meal of the day, which is dinner. I hope कुछ अच्छा होगा. The earlier you eat your dinner, the more healing your body will get, and the faster you'll reach your ideal weight. For kapha, dinner should be light. Some options are a comforting warm vegetable soup, or sauteed veggies with a tasty chutney, or a fresh salad made with leafy greens like lettuce, spinach, amaranth leaves, mustard leaves, or kale. Oh God, dinner. All dinner options they have given are only vegetables, either in the soup form or in the salad form. Again, zero protein, zero fat, and very little carbohydrate. Let's review the 3 questions on the basis of which we are going to rate this meal plan. Will it give results, which is numbers going down on the weighing scale? Yes, if your only goal is to reach a certain number. The diet plan that they have shared is approximately 700 to 800 calories, which is very low even for a leanest individual. On an average, minimum amount of calories a person would need to eat would be around 1400 to 1500. Now you're eating almost half of what you should be eating. Then why on earth you won't lose weight? You will lose weight, but you know what? All you will lose a lot of muscle mass, your skin, your nails, your hair. You will also invite multiple chronic deficiencies like B12, calcium, iron, etc. बस आप एक अंगूर से किशमिश में बदल जाओगे. I mean, if this is what you really want for yourself. So out of 10, I will rate this 7. 7 इसलिए because एक point पे आकर you will definitely hit a plateau and you will just stop losing weight as your body will see chronic caloric restriction as a threat and will start holding up on the fat. Will it complete all your macro and micronutrients requirements? Now, total 700 to 800 calorie के प्लान में जो मेजर फूड ग्रुप्स इंक्लूड किए हैं वो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सम लेंटिल्स एंड मिलेट्स व्हिच इज जस्ट कार्ब्स. फैट बहुत कम है एंड प्रोटीन तो जीरो ही है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग दिस इज हाउ आवर प्लेट शुड लुक लाइक. 1/4 ऑफ प्लेट शुड बी फिल्ड विद होल ग्रेन्स एंड 1/4 ऑफ प्लेट शुड बी फिल्ड विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटीन and half of plate should be filled with low calorie veggies and some healthy fat on the side. अब ये गाइडलाइन रैंडमली नहीं बनाई गई है, इसके पीछे कुछ लॉजिक है.
वेजीज हमें खूब सारा फाइबर देते हैं जो हमें डाइजेशन में हेल्प कराता है एंड ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करता है। प्रोटीन आपको एमिनो एसिड्स देंगे विच इज एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर योर सेल रिपेयर एंड ग्रोथ। होल ग्रेन्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे एंड हेल्दी फैट्स आपके ब्रेन एंड हार्मोनल हेल्थ को प्रमोट करेंगे। कोई भी एक मैक्रो इज नॉट सुपीरियर टू अनदर। Every macronutrient has its own place and quantity on your plate. So out of 10, I will give it a 2. Will you be able to sustain it throughout your life? आपका पता नहीं, बट मैं तो शायद एक दिन से ज़्यादा ये डाइट नहीं फॉलो कर पाऊँ। ये बैलेंस मील है ही नहीं। वीकनेस, लो एनर्जी, कॉन्स्टेंट क्रेविंग्स टू ईट कार्ब्स, मूड स्विंग्स लाइक इरिटेबिलिटी एंड एंगर बहुत कॉमन सिम्टम्स होंगे फॉर श्योर। एक दो दिन यू माइट फील लाइट बट यू वोंट बी एबल टू सस्टेन इट थ्रू आउट योर लाइफ। यू वोंट बी एबल टू ईट विद योर फैमिली, सोशल गैदरिंग्स एंड ट्रैवल तो भूल ही जाओ। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए, बिकॉज आपको कॉन्स्टेंटली ब्रेन फॉग एंड डिजीनेस रहेगी बिकॉज ऑफ लो ब्लड शुगर लेवल्स। You will have zero energy to play with kids or to do regular household chores. Most importantly, आपकी sleep disrupt होगी, आपका heart rate भी बहुत लो होने के chances हैं। देखो, डाइट कोई भी वो ही अच्छी है जो आप पूरी जिंदगी निभा सकते हो। Sustainability में इस प्लान को मिलेंगे 0 points out of 10. It really breaks my heart that so many of you are watching their video and getting influenced by it. Sadly, this video is not the only one on the internet. There are many these kind of videos which are floating around like juice diet, water diet, soup diet, etc. and whatnot. अगर आपका गोल सिर्फ वेइंग स्केल पे नंबर कम करना है तो ये सब ठीक है, बट अगर आपको वेइंग स्केल पे नंबर कम करने के साथ साथ बहुत ग्लो भी करना है, एनर्जी लेवल्स भी इंक्रीज करने हैं, डेफिशिएंसीज को भी रिड्यूस करना है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बचना है एंड सिर्फ लाइफ स्पैन ही नहीं अपना हेल्थ स्पैन भी इंक्रीज करना है, मीनिंग जिंदगी सिर्फ लंबी नहीं जीनी है बट एक अच्छी जिंदगी भी जीनी है, तो होलिस्टिक डाइट पे फोकस करो। एक्सट्रीम्स या फिर शॉर्टकट्स की तरफ मत भागो। सब कुछ खाओ लेकिन मॉडरेशन में। प्रोटीन एंड फाइबर पे फोकस करो। वीक में 3-4 बार एक्सरसाइज करो एंड डेली 30 मिनट्स वॉकिंग कर लो, बस बहुत है। वेट लॉस इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हमने बनाया हुआ है। क्या नहीं खाना है की जगह क्या खाना है एंड कितनी क्वांटिटी में खाना है उस पे फोकस करो एंड you will be good for life. So that's it for this video. Please hit a like button if you like this video and subscribe to my channel Fit Life with Prachi, and see you in the next video. Bye.